अच्छा, See, basically, this session is all about, we all have our own favorite stories that we share with our clients. You know, when we are talking to them, when we are prospecting, when we are doing, trying to increase a SIP or, trying to get them into this investment. So we all have our own stories. We all have our favorite things that we discuss, favorite experiences that we share. So we thought, let's have these, let everybody share their own favorite story that they talk about, and let's all gain from each other and see how we can also incorporate those stories into our selling. So that was the whole idea, right, ma'am? I think this was the yes. this was how it started. So you know, and at a time there was also this concept, okay, let's do a small mock session wherein how we prospect or how we talk to a client during the initial meeting. तो ऐसा था, तो उसमें भी क्या क्या स्टोरीज हम करते हैं. So that is what it was. So I think it's open to everybody now. Anybody can start with their own favorite story that they share. So your presentation is for advisors or clients? It's for advisors. Okay. It's for advisors, and it also has what are the favorite stories that normally we talk about. Okay. And how we try and explain various concepts. Concept to sabhi ka wohi hai, ma'am. The idea is how do we present it differently to each one. And my presentation also touches briefly on why story selling is important. Right. What is the importance of story selling? And I'm not calling it storytelling. I'm calling it story selling. Based on the book, right? There's this wonderful book which story selling for financial advisors. This book, you know, this is the Bible for storytelling actually, and it tells you all the kind of things for why storytelling is important, why you should By have who? story. Sorry, Who as advisors, how top producers sell? Scott West. Yeah, this is not normally available on Amazon, but kai baar hoti hai. It's slightly expensive. I think it's around 3,000 rupees, but it's worth every penny of it. So but everybody I think must use this book and go through it. I was trying to see if we can get a soft copy, a PDF. We can share it in our group, but वो मिल नहीं रहा था. वो ग्रुप में आप हैं क्या? हाँ, उसमें हूँ ना, बुक लवर्स में. उसके लिए कौशल, हाँ उसमें हूँ. उसमें कौशल को बोलना पड़ेगा कहीं से ढूंढ के लाएगा वो. He keeps on finding all these soft copies, which are very useful. So I will. Please. Okay. I will start with the story. See, I'll tell the story and it will imply why I'm telling this story. So, एक देश था छोटा सा पुराने जमाने में, और उसके दो भाग हुआ करते थे. एक था उत्तर काशी और एक था दक्षिण काशी, और दोनों विभाग में से एक नदी बहती थी. उत्तर काशी एकदम संपन्न विभाग था. वहाँ सब अच्छे दुकान थे, अच्छा सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था उधर का. और दक्षिण काशी में एकदम घना जंगल, बहुत जानवर, ऐसे कुछ वहाँ सुविधा नहीं ऐसा था. तो वहाँ की एक प्रथा थी, वहाँ हर 5 साल में राजा बदलता था. और क्या करते थे, एक हाथी माला लेके घूमता था उस देश में, उत्तर काशी में, और जिसके गले में वो माला डालेगा वो राजा बन जाता था. और 5 साल एकदम ठाट से रहता था, अच्छा राज करता था. 5 साल के बाद उसको उसी हाथी पे बिठा के जंगल के भाग में छोड़ दिया करते थे. नदी के इस किनारे छोड़ते थे, फिर वो चाहे स्विम करके जाए, चाहे कैसे
Ma'am, we've lost your voice. तो एक बार क्या हुआ, एक राजा, जब नया राजा आया, 5 साल उसने राज किया और फिर उसका जाने का वक्त आया, तो उसको हाथी पे बिठा के सब लोग निकले। और जब भी हर वक्त राजा बदलता था, तो पुराने राजा जो होता था एकदम दुखी हो जाता था कि अभी उधर जाना है ऐसे। लेकिन ये तो बहुत जाने से पहले ही 10 दिन पार्टी दे रहा था, सब लोगों को एंजॉय कर रहा था। और जैसे वो नदी किनारे पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि उसको रिसीव करने के लिए वहां से एक अच्छी सजी हुई नाव आई है। वो नाव पे बैठ के वो उस तरफ जाता है। तो एक्चुअली You lost you again, ma'am. anybody can tell me that why I am telling this story. Ma'am, we've lost the last part. ओके, तो जैसे नाव तक ये थे हम, नाव आती है लेने के लिए, तब तक थे। हमने समझा आप नाव में बैठ के चले गए। वो राजा जब उसका टाइम आया जाने का, तो बाकी सब राज्य जो होते थे वो रोते थे, दुखी हो जाते थे। लेकिन ये तो बहुत खुश था। और जब नदी किनारे पहुंचा, तो सब लोगों ने देखा कि उसको लेने के लिए एक नाव आई है, वो बहुत सजी धजी है, वहां बहुत सारे लोग उसको स्वागत करने आए हैं उसका। तो वो उस तरफ जाता है हंसी खुशी, और वहां रहने लगता है। तो होता क्या है, जब 5 साल वो राज करता था, उसी वक्त उसने उस तरफ का जो प्रदेश था वो भी बहुत अच्छा बना के रखा था, रहने लायक बनाया था। और वहां भी बहुत लोगों को उसने सेटल किया था, और वहां रहने की सब सुविधाएं, और वो वहां का हमेशा का राजा बन गया। यहाँ तो सिर्फ 5 साल ही था। तो अभी आप बता सकते हैं मुझे कि ये स्टोरी व्हाट इट इम्प्लाइज? Get ready for your retirement. यस। जब भी आप ये राजा हो, तभी आगे का राज आप बना के रखो। Great one. Next, anybody? Rohit ji, Who you is want? I've been actually fact telling rather than story selling. So I've been using engine that small amounts of money for long periods of time can give fantastic results. And then I use the SIP facility, that tool on the platform, and I show various funds ad hoc and say that, okay, see, these are the different points. But that's, again, that's data. That's not a story, you know. So this session is important for you then. Why Very story selling is important. important. Very important. And the other important story which I've picked up from you all is that the starving cow or the thin cow or whatever which we had done last time. So that is what's stuck in my head, you know, after that. That change is essential. Throw the cow over the cliff. Great. Next, Ajay ji. I'll start off. Yeah, please, sir. So for me, it has been more about experience sharing rather than storytelling, because वो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं तो रियल लाइफ सिचुएशंस इतने सारे आ चुके हैं कि पीपल हैव एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम these things, like the story which Naina ma'am just said, rather than using it as fiction, actual reality में हुआ है। 15 साल से कोई क्लाइंट है, उन्होंने ऑलरेडी एकदम fastidiously they have been saving and they have been able to put aside a very good corpus, and they are having a comfortable retirement now. मतलब I wouldn't even call it retirement. आजकल के बच्चों को financial freedom वाला शब्द ज्यादा पसंद है, and it's actually financial freedom. These guys are still freelancing as consultants, but they have put aside sufficient money today so that they don't need to actually work for a living, but they are doing it more as a passion. So एक वो है buy versus rent का भी I have got actual real life situations. Now I am surprised more because this was way back 15 years ago when I had a young couple who were onboarded, and they had gone in for a rental property, a really nice one. And at that time, like, I was not mature enough as an advisor, and I used to feel surprised about the whole thing. Line they were telling that
See, Vaidi, the problem is I cannot afford to buy out where I want to live. And I don't want to go for a thing like that. Eventually, we are not going to be staying around in Mumbai beyond 10-15 years. So, I'll be going to Delhi and I've already got a flat there. So at that point in time, 15-20 years ago, they were paying something like 28-30,000 rupees per month rent, which at that time is a huge amount for staying on rent, but at a property which they loved, which was convenient for them to travel for their working. It was where their friends were there, the friends group. So buy versus sell में वो टाइम में जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ था, वो आज के दिन में इतने सारे ब्रिजेश दालमिया and Milind Shah and the CFGP group and all that, these things we did 15 years ago. We actually saw these things. So in my case, rather than stories, something which has not happened or which is likely to happen or which is likely to motivate you to do something, I have got a few instances of people who have actually done certain things. So I feel it more practical, more realistic to share that with my existing clients. So like for youngsters, I tell them about something as simple as wanting to upgrade to the latest iPhone. So वो लोगों को short term, medium term, long term goals के लिए मैं उन लोगों को short term goals में उनको why wouldn't you like to upgrade to the latest iPhone करके बात करता हूँ. उनको medium term goals के लिए wouldn't you like to go for a foreign trip or maybe travel, that sort of thing. And then even for long term or semi long term, medium term, I talk to them about taking a sabbatical from work and getting back to work later on once they are comfortable and stuff like that. So for Aizani ki stories don't sell. Obviously they sell. I do use fiction and mythology also to sell. But I feel that practical stories hain bahut sare, wo rakh ke bhi hol sakta hai sales. And if no, it need not be my client. It can be your client, Sandeep ji. It can be Rohit's client. It can be Leela madam's client. We can always say that हमारे community में हम ये actual में देखते हैं करके बोल के एक दूसरे का. And I believe for all situations, as a group, as a group of maybe 25-30 advisors, amongst us, we would be having stories for all groups and all situations. And we can easily borrow stories from each other and sell that, which would be far more realistic and practical also. I'm not against storytelling, but I'm just saying storytelling with a practical touch. That's it. Great. Next. I think time is very short, so Leela madam. Leela ma'am. Good morning, everyone. Morning, Vishal ji. Vishal, storytelling. मुझे करना है. Ah, So basically, my favorite story is one of the Chinese bamboo, which I always tell all the clients. And another story is for health insurance. So a real story which I say. Chinese bamboo का story सबको पता है. Need I say it here? Yeah, please say it so that I have not heard that story. Okay, sure. So basically, while explaining equity, how it works, there's a non-linear growth there. And initially you might not see some growth, but eventually it will come up. So it's explained with the help of the Chinese bamboo story. So basically Chinese bamboo story is like when two friends were gifted a small sapling of Chinese bamboo, which was measuring about 2.5 inches each. And both were told to water it every day and see it grow. So both the friends started watering it every day. For the first 6 months, both were doing it very religiously, but nothing was happening. So one friend got a little agitated. 6 months I'm putting water, but nothing is happening. The other friend explained, let's keep doing what we told to. So again, both of them continue. And 1 year passes, 1.5 year passes, 2 years passes away, nothing happens. So the other friend who was agitated earlier is even more agitated now. I've been watering the plant, the saplings every day, and still nothing has happened. It is just that 2.5 inches only, and nothing is happening. So other friend says, keep patience. Let's keep doing what we were told to, and move ahead. So again, they keep watering it 2.5 years, 3 years, 3.5 years. Both meet again, and then the other friend again, the one who was agitated, is very angry, very agitated, very dejected
then nothing has happened. I did it for 3.5 years and nothing happened. So then he stops watering the plant and slowly the plant dies. But the other friend keeps the faith and keeps watering it. From the 4th year onwards, also nothing has happened till the 4th year. But shortly after the 4th year is over, the plant, the sapling starts growing, and within next 6 months, it grows up to about 80 feet tall. So this is the story of patience and perseverance and discipline, that you keep, watering the plant, like you keep doing your SIP every month on month. So there would be months and years when nothing would happen, but then there would be 6 months when a lot would happen, or a year when a lot would happen. So that's how I tell the story about Chinese bamboo. Similarly with the Chinese bamboo, that within the between the 4th and the 5th year, in 6 months, it will grow from 2.5 inches to about 80 feet to 90 feet. Similarly, your SIP also would grow that way. Just keep doing what you are supposed to do without getting dejected, without losing patience, keeping the discipline, without getting worried about the market or any other news and nonsense. Just keep the faith. Similarly, is for our advisors, the distributors also. Keep the faith, keep doing SIP 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh per month. Keep getting the lump sums. Your AUM will grow. Keep patient. Suddenly, even I did not realize there was a time when my CA practice was funding my staff and everything for the mutual fund distribution business. And then we started getting a small amount of 10, 20,000, 30,000. And when it snowballed, my total yearly income grew into, the monthly income was equal to yearly income at that time. What it was at that time. It's grown exponentially with insurance and mutual fund. So keep the faith, like you tell the the investors, you yourself also keep the faith and keep going. So that's one story. Another story which I tell is, any questions on this story? No, thanks, Vishal. Thanks for the story. Welcome. Another one which is I tell is a real incident which has happened. There was this Gujarati goldsmith businessman who had come to me through a reference of another partner. Other partner was a part-timer, so he was not able to help him with his mutual fund folios where he wanted to get it redeemed because of some KYC issues. So my team member helped him to do it. So then he came up with his mother's 1 lakh star insurance. Or his mother was around 70 years old. So I told him कि ये मिल रहा है, ये बहुत है, इससे आगे मिलेगा नहीं, but आप इसको अपग्रेड कर लो. और आपका इंश्योरेंस का क्या है, आपके और आपकी वाइफ और आपके सन का इंश्योरेंस का क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का. सो ही टोल्ड मी, विशाल भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक सोने का बिस्किट बेच दूंगा, मेरी हॉस्पिटलाइजेशन का काम इजी हो जाएगा. आई सेड, अलकेश भाई, एक सोने का बिस्किट बेचो, उससे अच्छा बेचना ही है तो एक सोने का छोटा सा गोल्ड कॉइन बेच दो, उतने में प्रीमियम हो जाएगा. तो कॉइन का काम आपको बिस्किट बेच के क्यों करना है. सो वहां से चले गए. उस दिन कुछ नहीं बोले, मेरे को लेट हो रहा है करके चले गए. द टिपिकल बिजनेसमैन, मेरे को लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ करके निकल गए. नेक्स्ट डे चेक लेके आए थे साइन करके, मेरे टीम मेंबर को भारी देके चले जाना चाह रहे थे कि तेरे सर को दे देना, जो भी फॉर्म है मेरे से साइन करवा ले, हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले मेरा. तो माय टीम मेंबर सेड, नहीं सर से तो बात करना ही पड़ेगा आपको. ही वाज रिलक्टेंट टू कम इनसाइड, बट बोलता है, यस विशाल भाई, सोचा मैंने कल रात को, आपका बात सही है कि भाई कॉइन से काम हो रहा है तो वो बिस्किट बेच के क्यों करूं मैं, आप मेरा और मेरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए. राइट. सो दिस इज अनदर स्टोरी आई टेल इन व्हिच people do realize with this. So such So that's metaphors related to their profession also help very much. Yes, it really helps. See, I try one more important thing. If I go and meet a businessman who is into, say specs business, so I try and explain him in that business. I had a client who was into she supplies masalas to all the big caterers in Mumbai and Surat. She was very, reluctant to invest in the mutual funds. She was like, and very anxious about her own business also. So I just asked her कि मसाले का बिजनेस केटरर्स को आप सप्लाई करते हो, केटरर्स का बिजनेस शादी की सीजन में ज्यादा चलता है, बरसात में नहीं होता है, तो क्या आपने 10 साल से बिजनेस करते तो बिजनेस बंद कर दिया क्या बरसात में जब नहीं चल रहा था. वैसे इक्विटी में भी आपको डरना नहीं है. लॉस आता है, बहुत लोगों ने बोला है कि लॉस आता है, बहुत लोगों ने बोला है कि लॉस आता है. लॉस आएगा, बट वो आप तब एग्जिट कर दोगी तो लॉस आएगा. आप बैठे रहोगी. सिमिलरली 4 महीना बरसात का नहीं आएगा बिजनेस, पर आपको बैठना तो है ही, दुकान तो खुली रखनी है अपनी,
तभी सप्लाई का काम मिलेगा आपको नवंबर दिसंबर में जब आएगा। और आपका नवंबर दिसंबर का जो बिजनेस है, नवंबर टू फरवरी का, वो पूरे साल का एवरेज खींच लेता है। इनफैक्ट यू आर मेकिंग सुपर प्रॉफिट्स एट दैट टाइम। सो दैट्स व्हाट आल्सो एक्सप्लेन्ड। सो उसी के बिजनेस टर्म्स में समझाओगे आप तो बहुत फर्क पड़ेगा। टेक्सटाइल वाला है तो उसको बोलो कि भाई एसआईपी जब लोअर एनएवी पे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है अपने को। सिमिलरली अगर जब शर्ट खरीद रहे हो, स्टॉक कर रहे हो सीजन का, तो कम में मिलेगा तो ज्यादा लोगे या क्या करोगे? That way I try to explain it to them. Right? I would like to add something regarding income. तो मेरा friend है insurance में, so I was convincing him so many days that you add mutual fund also in your portfolio, so you can help your client better. बहुत दिन से तो उन्होंने ultimately शुरू किया, and then he in first month he got 1 rupee commission brokerage, और फिर 3 महीने के बाद बोलता है कि मेरा इनकम है ना 6 times हो गया। तो आई अंडरस्टैंड कि कैसे मल्टीपल ग्रो होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद मुझे 6 रुपया मिला है। सो बट नहीं ग्रो होगा, सबका ही ग्रो होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। he understands that, but he was saying ये मेरा इनकम ये महीने में 6 times ग्रो हुआ। Lovely. So that's from my side. Hope you were not driving, na? Sir, you're not driving, no? No. अभी That is अजय जी दी स्टोरी टेलर हाथ ऊपर कर रहे हैं। यस अजय जी, यू आर ऑन म्यूट आई थिंक। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब ये सेशन चालू हुआ तो मुझे लगा कि मैं कोई स्टोरी टेलिंग नहीं करता हूँ, मैं केवल फैक्ट बताता हूँ। बट जो अभी एग्जांपल्स आए फ्रॉम डिफरेंट स्पीकर्स, सो आई रियलाइज आई एम डूइंग सम ऑफ दोस थिंग्स। फॉर एग्जांपल ये जो चाइनीज बैम्बू का आया है, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स से बोल रहे थे कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही पोर्टफोलियो में, तो मैंने उनको चाइनीज बैम्बू के वीडियो का लिंक शेयर किया व्हाट्सएप पे। मैंने कहा दिस इज हाउ यू नीड टू बी पेशेंट एंड नो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू ग्रो। एंड व्हाट आई टेंड टू डू, आई टेंड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो आई टेल देम कि जब मैंने जॉब चालू की तो मेरे पास सबसे पहले एक एलआईसी का बंदा आया, मुझे म्यूचुअल फंड का मालूम नहीं था और मैं एलआईसी में पॉलिसी में देता रहा मनी बैक में। और 20 साल बाद मुझे ये आई गॉट सर्टेन अमाउंट पीनट्स। फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि अगर वही पैसा मैंने एसआईपी की होती उसी दिन से यूजिंग एंजन टूल तो कितना बन जाता है एक्चुअली। सो दैट इज टू सिग्निफाई इन्वेस्टिंग इन द राइट एसेट क्लास। Other thing I tend to do based on my own personal thing is about my child's education. जिसने बीटेक वगैरह की तो मैं बताता हूँ कि मैंने I had started SIP for him and then this is how it grew actually. And in fact many times people ask me कि भाई child education में future में कितना लगने वाला है, तो I give my son's example. Also like skin in the game, तो मैंने भी मणिपाल सिन्हा का एक 1 crore का प्लान लिया recently in the month of March. Why? Because one client asked me कि आप हमें 1-1 करोड़ का प्लान सजेस्ट कर रहे हो, बट आपके पास कितना इंश्योरेंस है? तो उस समय मेरे पास कुछ बहुत ही कम था, पुराना जो चला रहा था 10-15 साल से। देन आई रियलाइज्ड कि लेट अस बाय 1 CR प्लान, तो मैंने लिया। एंड देन नाउ आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू कन्विंस अदर प्रोस्पेक्ट्स एज वेल फॉर गोइंग ए हायर सम एश्योर्ड प्लान एक्चुअली। So these are few things. So mostly मैं data facts से जाता हूँ, but I got to know कि something of my own experience I am doing as a sharing. So yeah, that would be all from me. Great. Yogesh? जैसे अभी सभी स्पीकर्स ने कहा कि स्टोरी टेलिंग, लेकिन मैं भी एक्चुअली स्पीकिंग डायरेक्ट मतलब स्टोरी टेलिंग नहीं करता हूँ। आई लाइक टू गिव एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ। और उसमें व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट है या मेरे इंश्योरेंस है और मेरा जो पोर्टफोलियो है, दैट आई ट्राई टू शो एंड टू शो देम कि ये ऐसा आप करोगे तो कैसे होगा। And in that I have put my real life. मतलब I had a dream of buying a home in Mumbai city, which I have realized. मतलब अभी मैंने बुक किया 1-2 साल पहले, so उसके 3-4 साल पहले से मैंने उसके लिए SIP करके रखा था। So I always used to tell the client कि देखो अभी ये मेरा एक ड्रीम होम है, तो उसके लिए ये मैं कर रहा हूँ। For that I am putting in aggressive funds kind of thing.
डॉटर के लिए। और मतलब ये रियल लाइफ एग्जांपल नाउ इट इज। अगर अनदर थिंग व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि इंश्योरेंस के कुछ क्लेम्स आते हैं, तो उसकी स्टोरी मैं जनरली बताता हूँ कि ऐसे ऐसे था, उसने ये नहीं किया तो क्या हुआ, आप करते थे तो क्या होता था। सो दैट वे आई ट्राई टू परsuade पीपल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। अदरवाइज जैसे मतलब नैना जी ने कहा वैसे टाइप की स्टोरी जनरली मतलब बताना मैं नहीं बताता। एक तो पोर्टफोलियो खुद का दिखा के एंड एक्चुअली अपने गोल्स जो है वो बता के और कैसे मैंने अचीव किए। मतलब मेरा मानना है कि मे बी आई शुड बी अ रोल मॉडल टू माय क्लाइंट, दे शुड लुक अप टू मी के हम लोग भी ऐसे करेंगे तो योगेश जी के जैसा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उनके जैसे अपने ड्रीम अचीव कर सकते हैं। सो मैंने कहीं पे आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे मैंने कहीं पे एक स्पीकर की बात सुनी थी कि यू शुड बी द टॉप इन्वेस्टर इन योर पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो सबसे बड़ा होना चाहिए, उसमें मतलब पीपल शुड लुक अप टू यू कि वह अपने को इनके जैसा करना है। सो ऑन दैट वे आई एम प्रोग्रेसिंग। लेट्स सी कैसे होता है। अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे अभी बहुत ऊपर है, लेकिन टेल भी बहुत लंबी है। तो मे बी वैसे करके उनको मे बी इंस्पायर करना, नॉट इम्प्रेस आई वुड से, इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ बेसिकली। टॉप क्वार्टाइल में है ना तो चलेगा। यस यस यस। I have a slightly different view. अपना अच्छा, we should be even I used to believe this and I was striving to do that. But looking at today's scenario, you know, SIP में पैसा बढ़ाने से ज्यादा बिजनेस में पैसा बढ़ता, बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। मैं भी यही कर रहा था 6 महीने 1 साल पहले तक मैं ये सोच में था। But sitting with Sarfaraz sir and Hitesh bhai Mali and all, realize one thing, yes, do a sizable amount of SIP, no doubt about that. Be amongst your top 10, 20, 15%, whatever you feel that you need to be in that to show a sizable amount, yes. But spend more on your business. Yeah, business growth शोशा में नहीं, business growth. एक्चुअल ग्रोथ बिजनेस से आने वाला है। मैं क्या एक्चुअल ग्रोथ तो बिजनेस से आने वाला है। Exactly. Your investment in business is going to pay you the maximum return. Exactly. No, whether it is brand building, whether it is infra, whether it is staff, team, whatever. But the kind of compounding which will happen there is going to be amazing. But then our clients also say ना कि म्यूचुअल फंड में किसी के और के बिजनेस में डालने से अच्छा मैं मेरे ही बिजनेस में डालूं। और आप साइजेबल एसआईपी तो कर ही रहे हो ना, वो तो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको इधर नच करना है। मेरे को अभी भी आया था मेरे क्लाइंट का 4 लाख का एसआईपी है, बंद कर दे, पैसा मेरे को दे दे, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। दे हैव ग्रोन अबाउट 100% इन लास्ट 3 इयर्स, निकल पड़ी है उनके बिजनेस में। तो फिर उनको समझा है सर अपने स्टार्ट क्यों किया था 2015 में, सो दैट आपका तो ये बोलना था विशाल 1 रुपया भी रिटर्न नहीं मिलेगा ना तो चलेगा, पर मेरा पैसा जमा होने दे, सब कुछ। So I just reminded him of the initial conversation that we had. You know, I normally answer this with the point that, you know, if your return on capital employed is more than 25%, do it. Otherwise, invest in TCS now, uska return on capital employed is more than that. Good one, sir. Good one. The business who's more efficient than we are. Absolutely, sir. But you know, why people invest in businesses? Essentially, why we say that you invest in mutual funds is to create a passive income, to create an alternative income, and to create a choice. Dipesh ji. Yes, sir. So this is an area where I also think I need to improve. I use some small stories or to break down concepts, but extensively, I think I also need to improve upon my orating skills. I may be able to write efficiently, but जितना अच्छे से शायद लिख पाता हूँ उतना अच्छे से स्टोरी टेलिंग शायद नहीं कर पाता हूँ. I think I need to improve on it. But to share over here कुछ concepts समझाने के लिए जैसे मैं stories share करता हूँ. एक तो विशाल भाई ने जैसे बताया चाइनीज बाम्बू वाला स्टोरी, that I got to know from जिगर पारेख का सेशन, तो I use that. उसके अलावा जैसे एक स्टोरी काफी एक्सटेंसिवली मैं यूज करता हूँ, तो
convince the family wala jo crowd rehta hai, those the people who have a family. So I just share that story जो मैंने recently LinkedIn पे भी डाला था. Think of equity as your third child. Right? आप अपने वो किसी को भी तुरंत लिंक हो जाता है. आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को तीसरे बच्चे की तरह देखिए. मोस्ट इंडियन फैमिलीज हैव 2 किड्स. अगर आपका एक किड है तो आप उसके आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को दूसरे किड की तरह समझिए, ट्रीट कीजिए. राइट? एक बच्चे को उसके पैदा होने से लेके उसको सेटल कर दिया, शादी कर दी, सेटल कर दिया. तो नो, फ्रॉम डे 1 टिल द डे योर किड गेट्स वेल सेटल्ड इन लाइफ, उसके पीछे जितना भी खर्चा करते हो, सेम अमाउंट ऑफ मनी यू पुट इट इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. ठीक है? आपका आपका एक या 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे आपका ख्याल रखेंगे नहीं रखेंगे. जो 25 साल तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो वो जो नेक्स्ट आने वाले जितने भी साल है आपके, जब तक आप जिंदा रहोगे, आपके दोनों जो असली औलाद है वो आपका उतना टेक केयर करे नहीं करे, बट ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ आपका टेक केयर करेगी. दिस इज इसका मुझे सामने से रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिलता है. यू नो, वेरेवर आई टेल दिस स्टोरी, लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं. एंड अदर थिंग, जो चाइनीज बाम्बू वाला स्टोरी, उसमें मैं थोड़ा सा मेरे थोड़ा सा अलग करके मैं बताता हूँ. आई टेल इट लाइक, आप अगर इक्विटी में SIP की तरह इन्वेस्ट कर रहे हो, आप समझो यू आर अ फार्मर. थिंक ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग एज ए फार्मिंग. राइट? अगर कोई फार्मर है, वो बीज बोएगा, रोज पानी डालेगा, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो जमीन को खोद के वापस देखेगा कि वो अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है. अगर वो करने जाएगा तो ही विल स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ दैट सीड. राइट? तो फार्मर की तरह देखो, यू डोंट गेट अपसेट अगर प्रोग्रेस नहीं देखते हो. तो जो इक्विटी, जैसे बीज बोया है तो उसको उगने के लिए एक टाइम होता है. राइट? सोइंग सीजन है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम होता है. तो दैट वे इक्विटी इन्वेस्टिंग ऑल्सो टेक्स टाइम. तो उसका एक टाइमलाइन है. अगर आप उसके बीच में छेड़खानी करने जाओगे तो आप कभी देख नहीं पाओगे रिजल्ट्स. That is how I try to explain the concept of SIP investing. But again, ये छोटे छोटी चीजें हैं जिसमें कुछ concept clear करने के लिए use करता हूँ. But I don't use storytelling as effectively I should be using. So this is an area of my improvement. And Sandeep sir, आपके से presentation से I would be love to learn from that. But आपके stories का concept जो आप डालते हो social media पर, that is amazing. Most of these stories are very, very good. And they are just pertinent and to the point, you know, and they simplify matters beautifully. एकदम crisp और उसका designing is so beautiful. मैं तो बार-बार that's what I said. you are in the wrong business. Excellent. एग्जैक्टली वो कंटेंट जो रहता है ना, वो सिंगल लाइनर जो रहते हैं ना, उसके लिए, उसकी वजह से बहुत क्लियर लगता है. अगर बहुत ही ज्यादा लिखा होगा ना तो मे बी लोग पढ़ते नहीं है, बोलते अरे कितना सारा लिखा है. लेकिन अगर सिंगल लाइन विद स्पेसिंग रखा ना तो उसका इफेक्ट और वो पढ़ने जैसा लगता है कि अरे चलो पढ़ते हैं क्या है, अच्छा, और क्लियर लगता है एकदम. वो बहुत अच्छा करते हो. अमेजिंग. Thank you. Still trying to learn. There's one more story which I share sometimes. I don't narrate much, but I share the video. Is the Bachat Nivesh Badhat video from IDFC. Bachat Nivesh Badhat. हाँ. विशाल भाई लिंक शेयर करना. हाँ जी, ब्रिलियंट वीडियो. कोई भी नया टीम मेंबर ज्वाइन होता है उसको सबसे पहले ये दिखाते हैं. The entertaining video, but a lot of this thing, like One Idiot, this is also a brilliant video. Yeah, One Idiot video is very good. One Idiot video is more about growing the money with SIP. This is more about the concept of a person who is spending only, concept of a person who is saving only, and concept of a person who not just saves but invests also. Very good video to get perspective, give perspective to the newcomers to the industry or people who are new to the financial industry. आज ही एजुकेशन टाइम्स में भी आया है कि मेजॉरिटी लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है. आई थिंक सो वी हैव अ बिग टास्क अहेड ऑफ अस to educate as many number of people. I am formulating a this thing with my team. How do we go and because we have this thing of creating 10,000 families by 2030. So how to go and do that, right?
I've shared that YouTube link बचत निवेश बढ़त का अपने ग्रुप पे डाला है मैंने. Great. Thanks, Dipesh. Anybody else, or should I start So the I'll presentation? go ahead. I'll Yeah, go ahead, please. Rishit here. Yeah. So if there's a millennial जो stock market में करता है, usually I ask him इसमें तेरे CAGR return कितना है, XI return कितना है. Usually उन लोगों को पता ही नहीं होता क्या है. So then I go on to say if you invest in the equities, एक शेयर आपके 10 stock में से 2 या 3 stock will be doing good, but your rest 7 stocks are not doing good at all. Technically as a portfolio you might be negative और hardly आपको inflation भी beat नहीं कर रहा होगा. So on that perspective, I usually say that investing in equity is like a very high risk game. Rather, I would suggest go to Goa, एक casino खेल लो, वहाँ पे 50-50% chances है. But in equity वो भी शायद आपका chances नहीं दिखता होगा. So that is something which I always say. Second thing about which Yogesh bhai said that I always show my portfolio to my clients और मैंने पूरा उसके अंदर mapping किया हुआ है. So currently, if I tell you, मेरा जो retirement corpus is looking at around 15 crore rupees या 10 to 15 crores के बीच में exactly मुझे अभी idea नहीं है. My SIP which is showing me is approximately उसके सामने around 20,000 का SIP show कर रहा है. So when I tell them कि मैं मुझे 15 crores चाहिए, if anybody asks me कि आज के दिन पे 15 crores, anybody will get shocked. But जब मैं उसको back calculate करके दिखाता हूँ कि मुझे सिर्फ 15 या 20,000 का ही चाहिए, so it becomes much easier for them to digest it. Second important thing which I always do for millennials is वो बोलते हैं कि हम long term. So I always say कि चलो एक अपन आपका जो fund है, let's put it into ELSS. Let's have a lock-in of 3 years. तो कई लोग वहाँ पे थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, वहाँ पे ही पता चल जाता है कि this person is not going to be, he will be a bit of finicky person. So then I come to know कि उसको कैसे asset allocation करना है. I can't be so risky on that front. At the same time मैं ये भी करता हूँ कि जिस अपना QPF में नितेश बुद्धदेव ने बोला था, I am not too sure मेरे बैच में. So how it works, आप जो equity आप जो डाल रहे हो, SIP कर रहे हो, as in continue SIP for 15 years, उसके बाद अपना SIP stop कर दो और बाद में आप SWP करो for your lifetime, which will double the amount. So कोई भी goal नहीं होता तो I'm trying to create certain kind of goals in this way so that कहीं ना कहीं पे वो link हो जाए. And on insurance front, I always say this thing that that in case if anything happens to you, write down 3 names who can help you. Might be your brother, sister, जो भी आपको नाम है, आप मुझे सिर्फ 3 नाम बताओ जो आपको 5 या 6 करोड़ का इंश्योरेंस आपको 5 या 6 करोड़ की हेल्प करेगा थ्रू आउट योर लाइफ. सो टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे हार्डली 1 या 2 लोग मिले जिससे लिखा हुआ था. और जो लिखते लोग वो लोग यूजुअली लिखते हैं इज देयर मॉम एंड डैड और देयर सिबलिंग्स. Now, when they say mom and dad, usually the person who is earning, unke mom and dad are near to 60s or 70s. So how much these people are going to help you in your life? So वहाँ पे थोड़ा सा उनको hit होता है. At the same time, if they say about siblings, now 5, 6, 7 crores is a huge amount. It's a huge corpus. So आपके पीछे डालेंगे वो अपने पीछे डालेंगे. And do you want that you be liable to your sibling or to your friend for 5 to 6 crores? आप वो बोझ के साथ जी पाओगे? So these are the few stories which I usually say, and bamboo up there जो विशाल भाई ने बोला is something even I use it regularly for SIPs. Anybody else, or should we? Should I start the presentation then? Yeah, so you can start the presentation. Okay, I'm going to be sharing the screen. Is the screen visible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So story selling for MFDs. This presentation actually I had created for a group of MFDs. So we have this group in Chandigarh. So उनके लिए एक बनाया है. So I thought let me first test market it on our own group. We have this wonderful sign, and it's also our our motto
I helped a man climb a mountain and found that I too had reached the top. So we've got this sign which is put outside the office. And normally when people come into the office, they see this. And it's a very reassuring thing for them. And a lot of people have actually come back and told us, yaar, ye to bahut badhiya baat hai jo aapne likhi hai. You know, so it is very, very reassuring. So this is the start of the story selling that we do. See, the way top advisors sell, you know, is by simplifying matters and not by complicating them. See, normally what happens is we try to put in a lot of numbers and a lot of concepts which end up confusing the investor. So the idea is to simplify it as much as possible. And as they say, numbers tell, but stories sell. Now, why do numbers tell and stories sell? वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा. But it's a very simple thing कि numbers जो होते हैं ना, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपका जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें आपको मार्केट में 12 से 15% का रिटर्न आने वाला है. So you'll say, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, but you don't understand numbers. See, the problem is most people do not understand numbers. They definitely do not understand compounding. And 12 से 15% 5 साल, 10 साल, 20 साल में कितना होने वाला है उनको नहीं समझ आता. पर अगर आप उनको ये बोलेंगे कि अगर आप ये सिप चालू करते हैं तो you'll have enough money, you know, for your daughter's wedding or for your child's education or for your own retirement. This is the amount you'll be able to accumulate for your retirement. Now, this is something that they'll be able to relate to. So that is why stories become very, very important. You know, we all suffer from this curse of knowledge. You know, we know a lot, but we assume that the other person also knows a lot. But that is actually not so. You know, अगर आप देखेंगे आपके क्लाइंट को शायद नहीं मालूम है कि जो हमें कॉन्सेप्ट्स मालूम है, जो हमें कंपाउंडिंग के बारे में पता है या हमारे रूल्स ऑफ 72 के बारे में पता है, तो हम अपना जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारा जार्गन यूज करते हैं. वो जार्गन उनको नहीं समझ आता. So what we need to do is we need to be very, very careful about this curse of knowledge that we have. You know, that we simplify matters and we try to explain it to them in such simple language that they are able to understand and they are able to relate to. Now, this is something which is very, very important. Would your message pass the grandma test? Use the grandma test with all your communication. Are your explanations of investing concepts simple enough, you know, so that any grandmother out there would understand the principle or the idea you're talking about? And we've actually tried to check it out with the grandmother. You know, कि उनको समझ आता है, जिनको इस market के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसको returns के बारे में कुछ नहीं मालूम, she's possibly only been saving small amounts of money for, you know, most of her life. So she doesn't understand all this. And she doesn't know what is the difference between saving and investing also. So does your communication pass this test? अब जैसे वो दिपेश करते हैं, दिपेश का जितना भी मैंने communication देखा है, most of the communication will pass that test. You know, because he makes it so very simple. You know, most of the concepts that he does, that they are so very simple. You know, so it becomes very, very important that you do this. And then we must remember what is the client looking. We assume that the client is looking for returns, for risk optimization, for handholding, for achievement of goals. But the basic thing which the client is looking for is trust. You know, are we in any way communicating, you know, certain things with which are, you know, they can build trust? That is something which is very important because that is the basic thing. अगर उसको trust नहीं है, अगर वो obligatory investment भी कर रहा है, तो आपके साथ minimum 2-4-5% का investment करेगा, उससे ऊपर नहीं करेगा. आपको trust build करना है. So that is something which we need to look at. You know, there was a recent study by Investors Research, you know, where clients were asked what their priorities were with their financial advisor. And these were the priorities which the clients said. You know, these were the 7 priorities which they said. First was understand my situation. Second was educate me. Respect my assets no matter how small. Monitor my progress. Solve my problem. Don't sell me a product. Keep in touch and help me feel important. Now, this is something which is very, very important. Help me feel important. You know, everybody wants to feel important. And please make a note that all 7 of these priorities are relational in nature. You know, making a favorable impression as a human being supersedes making a favorable impression as an advisor in the eyes of the client. So what we need to do is we need to ensure that we're making, you know, we are coming across as people who will care, people who will always be there, you know, people whom they can trust. So that is something which is very, very important. So is the investor buying mutual funds? No. What is he buying?
He's buying our conviction, our knowledge, our experience, our passion, our systems and processes, our skills, and our trust. That is something which the investor is buying. He is not buying. और हम करते हैं क्या, हम म्यूचुअल फंड बेचने जाते हैं जनरली. हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ये फंड अच्छा है, ये फंड अच्छा नहीं है, आपको इस फंड में डालना चाहिए, इस फंड में क्यों डालना चाहिए. वो ये नहीं, वो तो उसमें शायद लास्ट इंटरेस्टेड होगा. This is how our brain functions. There are two parts of the brain, the left brain thinking and the right brain thinking. The left brain thinking is all the rational thinking, the mathematical, the numbers and everything. And the right brain thinking is behavior. And there is enough research which you can share, I can share with you also, that there is enough research which says that all decision making is done by the right brain. And right brain ko kya chahiye? Usko story chahiye. All risk-taking decisions are taken by the right side of the brain. It is not taken by the left side of the brain. That is why we see, people making mistakes, because they don't take risk based on numbers. They take risk based on behavior. Unko jo, my mother tells me to buy a house, so I buy a house, whether I can afford it or not. So that is how the decisions are made. And we normally, what happens is we don't address this part of the decision-making process. We address only the numbers part, the left brain. And left brain plays a very, very small role in deciding. There was a survey on what people noted most when others were talking to them. 45% of the people said they noted body language. 35% said they noted tone of voice. And only 20% said that content is important. And what do we all focus on? Content. See, tone of voice, I'll tell you, अगर आप जाके client को बोलेंगे बड़े मरी हुई सी आवाज में, सर ये मार्केट में पैसा डालो, ये मार्केट तो बहुत अच्छा करने वाला है, तो क्या डालने वाला है पैसा? वो नहीं डालने वाला पैसा. अगर आप बोलेंगे एक पैशन के साथ, और पैशन कैसे आएगा आपके आवाज में? कन्विक्शन के साथ. कन्विक्शन कैसे आएगा? नॉलेज के साथ. That is how trust will get built. So we need to improve on that. We need to improve on our body language. Our body language has to convey, yes, we are trustworthy. These are the signals we send, and we need to check ourselves. Are our eyes open, receptive, and inviting a question, or are they questioning, intense, or scrutinizing? Eye contact जब करते हैं, तो eye contact से उसको signal जा रहा है जो आपका client है. आपकी जो facial muscles हैं, आपकी facial muscles tense हैं जब आप बात कर रहे हैं, और या बहुत relaxed हैं, आप smile कर रहे हैं, आप बड़ी easily उनके साथ communicate कर रहे हैं through your body language. Hands, are your hands closed? Or are you pointing? Are your hands open, communicating generosity, helpfulness, open-mindedness? And are your gestures smooth and gentle? People are noting all this. We assume कि वो नहीं कर रहे, पर वो कर रहे हैं. And gestures are very, very important. Postures. Are you looking down on the person? Are you too far or too close? Is your posture open or closed? So that is something which is very, very important, which we need to check. And I think we need to practice this. This always comes with practice. We can practice, sitting in front of a mirror. We can practice with a colleague on how to improve on all these kind of things. Even the client is giving you warning signs. So these are the client's warning signs. The raised eyebrow, the scrunched up nose, narrowed eyes, all these kind of, indications the client is giving you. So you need to see the indications which the client is giving, and you need to make changes accordingly in your communication that you're doing with your client. Everybody has a different relationship with money. Some people, this is a very common question that we try to ask each client. What if money were no object? What would you do? That tells us the kind of aspiration that he has. What is the dream that he's looking at? We are in the business of selling dreams. We are in the business of helping clients achieve their dreams. So we need to understand what is their dream. If there was no restriction, what would you do? What would the client do if money was no object? And what is the kind of level of money that he's talking about? Everybody has a different relationship with money. Requirements are different. Return expectations are different. Time horizons are different. Risk appetite is different. And we try to, so what we need to do is we need to, modify our communication for each and every client. It cannot be a general one story for everybody. It has to be a different story for everybody, because everybody's requirements are different. Their risk appetites are different. So that is why
there are certain clients who come to us and they tell us कि boss मुझे 10% से ऊपर नहीं चाहिए. My requirements are going to be satisfied with 10%. I just want to beat inflation. So I don't want to take any risk. यार मुझे कोई इतना वो ज़्यादा वो return करके कुछ वो नहीं करने का. So we try to give him an asset allocation which will give him that with a minimal amount of risk. So that is what we need to understand in all our stories that we do. And finally, this KISS principle is something which everybody should adopt, and which is that keep it simple, stupid. As simple as possible that we do. That is how we can become better communicators and we can become better storytellers. Now, these are the 7 biggest financial mistakes which everybody does. So how do we have stories around these mistakes so that people, can relate to these stories? And what are these mistakes? Not having a financial plan or goal, not quantifying it, not having a budget, not following a financial hierarchy, not starting early, not investing in equity, and no review. These are the basic mistakes which you will find that most of the investors are making. So how do we get in stories? Now, the first thing is, like I said, people don't understand numbers. So we try to tell them, do you really understand inflation? What does inflation mean? हम बोलते हैं 5% inflation है, 7% inflation है, but do you really understand inflation? Now, inflation, if you look at for the last 20 years or so, look at dining out with the family. हम बोलते हैं 5% inflation है, but पिछले 20 साल में most of the things have gone up 5 times. Medical tests. Now, this is something which I always try to tell everybody, and these medical tests are not covered by any medical insurance. You have to be ready for that. In the last 20 years, medical tests have gone up by around 8 to 10 times. Are you ready for that? By the time you retire, a medical test that you need to do will possibly cost you 50,000 rupees. Are you ready for that? To spend 50,000 rupees maybe once every quarter or once every 6 months, to conduct medical tests. So this is something which is important. Next is the rule of 72. Nobody understands. सभी लोग क्या बोलते हैं कि यार 6%, 8% में क्या फर्क पड़ने वाला है? But if you tell them, the difference, everybody has 35 years. Most people have 35 years. They start investing at 25 and they retire at 60. So let's say a difference in these 35 years between a 6% and 12%. अगर आप 6% का उस asset में डालते हैं, तो that is 8 times. अगर आप 12% में डालते हैं, that is 52 times. और अगर 50% में डालते हैं, तो 128 गुना. So normally what we do in this is, I always tell them this rule of 72, that every 72 divided by your return is the number of years it takes for your money to double. So I tell them, okay, let's do this exercise. अगर आप 6% पे करते हो, 12 साल में डबल हो रहा है, तो 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8. 8 बनने वाला है आपका 35-36 साल में. अगर आप 15% में कर रहे हो, और 15% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 40 साल में मार्केट ने 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, तो इसलिए 15% की बात करते हैं. तो 15% पे हो रहा है, तो 4.5 साल में डबल हो रहा है. लेट्स से 5 साल में डबल हो रहा है, तो 5 साल में लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. 5 साल में 2, 10 में 4, 15 में 8, 16, 32, 64 और 128. तो ये फर्क है. तो अगर आपने 1 लाख रुपया डाला, तो 1 लाख रुपए का 8 लाख बनने वाला है, या 1 लाख का 1 करोड़ 28 लाख बनने वाला है. आपका मर्जी है, जिसमें मर्जी डालो. So this is how number is explained so that they can relate to the number. Then compounding. This story about compounding is something which I find very fascinating. कि मैनहट्टन के बारे में सबको मालूम रहता है कि मैनहट्टन is this wonderful island in New York. तो 1626 में this gentleman called Peter Minogue, he bought the Manhattan Island from the local Indians for $24 and didn't even pay money for it. What he did? He just paid some beads and clothes and all those kind of things. So आपको लगता है यार $24 में लिया, तो ये तो बहुत उसने उल्लू बनाया इनको. पर अगर वो $24 अगर इंडियंस ने 8% बॉन्ड में डाला होता, तो आज that would have been worth 26 trillion. And what was the GDP of US last year? 25 trillion. So this is the power of compounding. That is the magic. Your money keeps multiplying the longer that you save. So that is something which you need to do. Similarly, another story that I find very, very effective, especially in IAPs, is that if I ask a client कि मेरे पास एक जादू का रुपया है, मैं आपको एक जादू का रुपया दे सकता हूं जो हर रोज 31 दिन के लिए डबल होगा.
या फिर 1 करोड़ रुपया मेरे से आप आज ही दे लो, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? So there is a mixed reaction, and most people will say 1 rupee. Why? Because they know that there is some story which is coming, right? But they don't still understand what that 1 rupee can do. You know, if you ask everybody in that group, in that IAP, अच्छा वो 1 रुपया कितना बनने वाला है? So somebody will get various answers. कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़. You know, and but nobody will come to the real figure. You know, I'll tell you the real figure. Now this is what we tell them. कि अगर आपने 1 रुपया लिया तो 15वें दिन 16,000 रुपया बनने वाला है. तो अभी भी क्या चाहिए बोलो? 1 रुपया चाहिए कि 1 करोड़ चाहिए? You know, so then people start thinking, यार ये क्या है? अभी तो 15 दिन हो गए, अभी तो 16,000 रुपया ही हुआ. Then we tell them अभी 20 दिन हुआ, तो 20 दिन में भी 5 लाख ही हुआ. तो अभी बोलो क्या करना है? अभी 1 करोड़ लेना है कि 1 रुपया लेना है? You know, so अभी then people के दिमाग में डाउट आना चालू हुआ. तो अभी 23 दिन में क्या हुआ? 40 लाख. अभी बोलो क्या करना है? You know, and 25वें दिन जाके it crosses 1.67. But now if you tell them, now can you tell me how much will this 1.67 become after 31 days? You know, from 25th day to the 31st day, 1 करोड़ कितना बन जाएगा अगर वो रोज डबल हो रहा है? You know, and again, most people can't come out with an answer. And this answer, when we tell them, this is 107 crores, you know, on the 31st day, and they understand, that is when they realize what is the power of compounding. And once anybody understands compounding and anybody understands inflation, I think half our job is done. You know, that is the time when we can tell them, okay, boss, ये कैसे होता है? Another way to explain compounding, which I find very effective, at least in Punjab, is explaining compounding the single malt way. कि 12 साल का जो single malt है वो $35 का है, तो अगर वो जब 21 साल का होता है तो $150 का हो जाता है. अभी 9 साल ही हुआ तो अभी वो 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया. और जब वो 50 साल का होता है तो $25,000 का हो जाता है. तो कहाँ 12 साल का सिंगल मॉल्ट 35 का है, 50 साल वाला जो है वो $25,000 का है. This is how compounding also works, and you can see this compounding working in single malt whiskeys, and most people are single malt drinkers, so they associate and relate with it immediately. The advantage of starting early. Now this is again a favorite slide and people immediately relate to it. You know, we talked about Karishma Kapoor and Kareena Kapoor, and we say, okay, Karishma started working at the age of 18 and she stopped working at the age of 25. And what she did, that every year for 10 years, for these 8 years, she saved 10 lakhs and invested that 10 lakhs. So the total amount she invested was 80 lakhs. And Kareena, she started at 25 and she kept on investing till 60. और उसने 10 लाख हर साल डाला, तो 36 साल इन्वेस्ट किया, उसने 3 करोड़ 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया. Normally this is a clickable thing, so they don't know the figures. So when Karishma is 40 years, she'll have 12.84 crores. When Kareena is 40, she'll have 6.4. When 50, 51.96, 28.25. When 60, she's just invested 80 lakhs at the age of, up to the age of 25. And what has that amount grown to? 210 crores. And what is the amount Kareena has grown to, even though she's invested, you know, for 36 years, not even just half the amount. And this is all at 15%. So we tell them, you know, for your children, do it for your children. You know, maybe we are not able to do it now, but do it for your children. If you can do 10 lakhs every year for your children for 8 or 10 years, you know, that is something, they will attain financial independence. So give financial independence to your children. Again, role of different asset classes, they always tell them, क्योंकि in the last 43 years, what has happened? अगर आपने FD में डाला होता तो 16 गुना हुआ. 1 लाख का 16 लाख हुआ, because बीच में FD का रेट भी बहुत था. Gold was 913 रुपया तोला in 1979. Today it is around 62,000. So that is the kind of growth which has happened. Silver 76 times, but equity has grown 620 times. I always give them an example of property also. Like in Chandigarh, for example, a 500 square yard house in 1980 used to cost approximately 5 lakhs. Today it is approximately 10 crores. तो लोग बोलते हैं मैंने 5 लाख डाला, देखो आज 10 करोड़ का हो गया. तो टेल देम यार 5 लाख डाला, 10 करोड़ का हुआ, वो भी 200 टाइम्स हुआ. अभी इसमें कितना हुआ? 600 टाइम्स. तो आपको बताओ क्या करने का है, उसमें डालना है कि इसमें डालना है? And this, what we were talking earlier, SIP today, SWP tomorrow. Always tell these youngsters, 15,000 का SIP कर बॉस 15 साल के लिए.
उसके बाद 50,000 रुपया महीना ले फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल ऑलवेज हैव 1 crore in your bank account. 15,000, 15 साल, 15% return is approximately 92-93 lakhs. But I can tell you funds in the last 15 years, we have those examples, last 15 years, there are at least 12 or 14 funds which have given a return which is more than that. And the amounts which it has grown to is much, much more than that. तो अगर 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा होता है 15 साल के बाद, 6% का SWP किया तो 50,000 रुपया महीना मिला फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड आपके पास 1 करोड़ अभी भी है, जब भी चाहिए आपको आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट सी पीपल, हाउ डू LIC सेल एंड ऑल दीज पीपल सेल? आप अभी करो, एवरीबडी व्हाट डज एवरीबडी वांट? एवरीबडी वांट्स एन एश्योर्ड इनकम. हम उसको बोलते हैं भाई तू 15 साल के लिए डाल, तो उसके बाद एश्योर्ड इनकम लेना. और ये देख, इसका बैक टेस्ट का रिपोर्ट है, जिसने 15 साल पहले डाला उसका ये रिपोर्ट है, तो ये देख लो आप उसके लिए. एंड नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग रिस्क. पीपल एक्चुअली डू नॉट अंडरस्टैंड रिस्क. सभी लोग सोचते हैं कि मुझे रिस्क के बारे में तो मालूम है. तो दिस स्टोरी इज अबाउट रिस्क. दिस इज अ वेरी फेवरेट स्टोरी दैट आई टेल अबाउट रिस्क. सी, रिस्क इज समथिंग व्हिच वी डोंट नो. Risk is not something which we know with what can happen. Market can correct. That is the risk we know. तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं. But अगर कोविड होता है तो वो that is risk which is totally unexpected. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? But this example, Howard Marks shares this example beautifully. He tells this story about a gambler who used to lose regularly. So one day he hears that there's a race जिसमें एक ही घोड़ा दौड़ने वाला है. तो वो क्या कहता है, अपने उस पे सारा पैसा लगा देता है. पर वो घोड़ा क्या करता है, वो रेस छोड़ के बीच में भाग जाता है, तो वो कभी भी पैसा हार जाता है. That is because the gambler could not imagine or anticipate the occurrence of such an event. Now, risk is also like that. Risk is about what cannot happen. Russia will attack Ukraine. Nobody knew in January 2021, 2022. Nobody knew about it, but it happened. And that led to the biggest risk in the market. So can you plan for risk? No, you cannot plan for risk. You have to understand what is the difference. Each person takes his own risk. Please do not copy where your friend is investing. हर एक का requirement दूसरा है, हर एक का capacity अलग है, हर एक का preference अलग है. So that is what it is. Everybody is I have told this story so many times of the Somnath temple. We are all governed by our habits, by our money habits. जो मेरे parents करते थे, जो मेरे mother, father करते थे, अभी मैं भी वही करता हूँ. That is why I keep on investing in FD. Now this story about Somnath temple is about the habits of money. Somnath temple was made in the 4th century. तो उस टाइम क्या होता था, बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो लोग अपना सारा वैल्यूएबल जो होता था वो जाके मंदिर में रखते थे कि मंदिर में कोई चोरी नहीं करेगा. ये बहुत देर चलता रहा, kept on going on for 600-700 years. But in the 11th century, Muhammad Ghazni came and he came to know कि वो सब सोना वोना जो है लोगों का मंदिर में पड़ा है. तो उसने मंदिर को लूटा और वो लेके गया. पर मजे की बात क्या है कि उसने मंदिर को अगले 3 साल में 17 बार लूटा. अब 17 बार लूटने का क्या मतलब है? जब एक बार लूटा लेके सब चले गया, तो 17 बार उसको जब आया बार बार उसको क्या मिलने वाला था? But what were people doing? People were still going and keeping the money again in that same temple. They were not keeping it anywhere else. वो घर में गड्ढा खोद के भी डालते ना, तब भी पैसा बचता. पर अभी क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि आदत डला हुआ है. अगर वो 7 वाला भी डाल रहा है तो मैं भी उसमें डालूंगा. तो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर ऑल गिवन बाय हैबिट्स. अगर 17 बार उसने लूटा, मतलब 17 बार लोगों ने जाके वहीं पे पैसा रखा. और जो 18 बार नहीं आया ना, वो इसलिए नहीं कि लोगों ने पैसा नहीं रखा, इसलिए कि वो उसके बाद उसका डेथ हो गया और वो चले गया. So that is how people do it. So we have to tell them, please be wary of this. Don't do something which somebody else is doing and break this habit of money. Another thing, most people don't understand equity. हम सबको बोलते हैं कि इक्विटी बाजार में पैसा डालो, पर उनको इक्विटी समझ नहीं आता है. उनको इक्विटी में क्या समझ आता है, जो उन्होंने किसी से सुना है. और उन्होंने किसी से क्या सुना है कि इक्विटी तो सट्टा है, इसमें तो बहुत वॉलेटिलिटी है, इसमें तो मेरा पैसा जाता है. So how to explain equity to somebody in a very, very simple manner? So there is this story of a man and a dog. Now this story is from this wonderful book called Lion and Zebra Country. It's by a book by Ralph Waldo. If you have time, you must read this book. So the story of a man and dog is what? There's a man who has a dog and he takes his dog out for a walk every day. Now typically what happens is, जब वो अपने
पेट को लेके जाता है सैर पे, तो वो जो डॉग होता है ना वो बहुत मचलता है, वो कभी आगे भागता है, कभी पीछे भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, पर आदमी ने तो उसको लीश पे रखा हुआ है, तो जब लीश से वो दूर नहीं जा सकता, बट आगे पीछे बहुत जाता है, तो ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो अभी डॉग जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतना ही करेगा ना जितना उसका जो ओनर है वो जितना वो ट्रैवल करेगा, और जितनी देर में वो ओनर वापस आएगा तो डॉग को भी वापस आना पड़ेगा। सो नाउ द मैन इज लाइक द अर्निंग and equity is like and the dog is like the market. So what will happen is the market keeps on roaming here and there, but finally it is governed by the earnings. जितना अर्निंग होगा, जितना अर्निंग पर शेयर होगा, उसका मल्टीपल ही हमारा इंडेक्स होगा। तो जितना मर्जी इक्विटी इधर उधर भाग ले, बट लॉन्ग टर्म में तो अर्निंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहता। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म में मैक्रो फैक्टर, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी, ये सब चीज इफेक्ट करता है। अब जैसे वो डॉग जा रहा है तो उसको क्या है, कोई और कुत्ता नजर आता है तो उसके पीछे भागता है, उसको कोई हड्डी की स्मेल आती है तो उसके पीछे भागता है। तो इसी तरह से मार्केट भी इधर उधर भागता है, बट एंड में तो मार्केट को अर्निंग के पास ही वापस आना है। तो जितना अर्निंग है उसका ही मल्टीपल रहने वाला है। Another thing which we've noticed is that investors don't dream big enough. We have to make them dream big. We have to tell them what is possible in this market and what can be achieved. So that is something which is very, very important. We always tell them, boss, today our favorite selling story to all investors is make your children or make your grandchildren financially independent. Maybe you are not able to become financially independent to the extent that you want to, but make your children or grandchildren, and this can be done with very, very small things. I always share the story of my peon in the office, and which is actually a true story. When we had started doing this business around 5-6 years ago, so one day we tried to test out all our theories on our peon. So we asked him to, कि आप बताओ यार, आप आते हो यहाँ पे और आप हम सबके लिए गोल प्लानिंग करते हैं, तो आपके लिए गोल प्लानिंग करते हैं, आपका क्या गोल है? तो he said कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए when I retire. A young man, 24-25 years, 60 साल की उम्र में रिटायर होना था। तो we said wonderful यार, अगर आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो आपको क्या लगता है उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो he said साहब बहुत करना पड़ेगा। And frankly, let me tell you that even we did not know कि उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. We were just starting out. But when we did the calculation, we realized that he needs to only invest 800 odd rupees a month at 15% return, and it will amount to 1 crore. Now, he is getting a salary of 10,000 rupees. अभी तो 800 रुपए शायद उसके लिए बहुत ज्यादा लगता हो उसको, बट आने वाले बाद में क्या 800 रुपए इतना लगेगा उसको? नहीं लगेगा, राइट? तो we said okay, you start investing and you do 1,000 rupees तुम डालो, 1,000 rupees हम डालेंगे तुम्हारे लिए। तो हमने उसके लिए करना चालू किया, ये 6 साल पहले उसने शुरू किया। तो अभी जब कोविड के बाद one day he came to us and we were managing his money and he didn't know anything. Now nor did he ask us ever कि मेरा कितना हो गया। तो कोविड के बाद वो एक बार आया हमारे पास, अभी उसमें this was around I think last year or year before that, and he said I need some money, मुझे लोन दे दो आप। तो मुझे क्या करना है तुम्हें लोन? कहता मुझे घर में गांव में भेजना है, गांव में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कितना चाहिए? तो he said कोई 50,000 रुपया लोन चाहिए। So we said तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? And he said कि नहीं मुझे नहीं मालूम मेरे पास कितना है। When we showed the figure to him, which was in lakhs, a couple of lakhs and more, he started crying. He didn't realize that that is the power of investing, and that much money can be, could never imagine that he'll be able to collect, he'll be able to have, 2 or 3 lakh rupees in his account, and that was something which was not even possible for him. So that is how, most investors don't know what can be done. With a 15% return in 40 years, you require only a SIP of 43 lakhs to become 100 crores. You need a lump sum of 37 lakhs. We actually, we contacted an investor. His daughter was getting married. So we said कि 25 लाख अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट कर दो और उसको भूल जाओ। वो जब 25, 30, 40 साल के बाद उसके बाद इतना पैसा हो जाए that she'll always be financially independent. And he actually did that, and that money has started growing. And we mapped that goal for him. And whenever we show his investment, that is the first thing he asked कि मेरी बेटी का कितना पैसा हो गया, and वो गोल से कितना दूर है, तो अभी मैं क्या कुछ और डालूं उसके लिए. So that is how it is happening. Like I said, give the clients a dream, make your children, grandchildren financially independent at the age of 30, and they can actually become financially independent at the age of 30.
like Kaushal is doing. You know, the day his child was born, I think within 12 hours he had started investing for the child. Now that child is going to be financially independent at the age of 25 or 30. Look at the kind of choice it gives him. Look at, you know, he can do whatever he wants to do. He can follow his passion. He can do whatever. You know, so let's have that billion dream. You know, let's create that billion dream for the client. And this is my favorite doha. कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे 100 जड़ा ऋतु आए फल होए. सो रिटर्न्स तो बहुत लॉन्ग टर्म में ही आने वाली हैं. अब जितना मर्जी पानी डाल लो, जितना मर जाओ उसकी खाद डाल लो, आम का पेड़ जो है वो तो 8 साल के बाद ही फल देने वाला है, राइट. तो ये आम का पेड़ में क्या रहता है, वो हर ऑल्टरनेट ईयर को फल देता है, वो हर साल भी फल नहीं देता उसके बाद, पर फल जो है वो सारी जिंदगी देता रहता है. तो आपको आम का पेड़ बीजना है तो आम के पेड़ के लिए आप 7 से 8 साल उसमें रेस्ट करो. So stop wishing, start doing. This is the Bible of storytelling for MFDs that I was talking about. Storytelling for financial advisors. This book is around, I think, 3,000 rupees or so. But please buy it. Please read it. I think it gives wonderful insights on this business. Thank you. Excellent, sir. Excellent. As usual. Very good, sir. आप इतना सब अच्छा बना के आते हैं. Very nice. So much Very useful. मैं तो इसमें एक ही चीज सीखा है कि कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट. The language, body language, and the tone of the voice is most important. So You are a fantastic storyteller. Conviction behind telling. So conviction चाहिए उसके लिए, स्टोरी सेलिंग के लिए. कन्विक्शन तो इन्वेस्टर को समझने की काफी पावर देता है. Sorry, Vishal ji, you were not. I couldn't hear you. आपका कन्विक्शन इन्वेस्टर्स को नहीं, हम लोग सब लोग को भी बहुत पावर देता है. अरे बाप रे. ट्रू ट्रू बट सुपर ब्रिलियंट. काफी सिंपल चीजें हैं जो अच्छे से कोलेट करके क्लाइंट को बताया जाए तो आई थिंक आपको इसी के डिविडेंड मिल रहे हैं. सर बेसिक चीजें देखो, आपको मुझे सबको मालूम है कि इस धंधे में जादू की छड़ी एक ही है, एंड दैट इज कंपाउंडिंग. इट इज नॉट फंड सिलेक्शन, इट इज नॉट एनीथिंग एल्स, इट इज कंपाउंडिंग. द लॉन्गर ही स्टेज इन्वेस्टेड, right, the more the return which is going to come. So the idea is to build conviction in compounding for the client and make him understand inflation and make him understand why equity is the best asset class. True. And do it in as simple words as possible. I'll share the presentation in the group. So anybody wants to use it or anybody wants to use any of the stories can use it. I'm looking forward to meet you in person, sir. 7, sir. Excited. किसी और को सूरत आ जाना है, आ जाओ 9 तारीख को. Vivek, I'll be in Delhi on the second morning. But maybe only for an hour or 2. You are around. Share your plans. मैं कॉल करता हूँ. राजधानी से आ रहा हूँ, then moving to ऋषिकेश. And you are returning by Dehradun, na? Dehradun, yes. I think so. आप और मैं सूरत एयरपोर्ट पे इकट्ठा हो जाएंगे. आप सूरत नहीं आ रहे, आप मुंबई से आ रहे हैं. नहीं, मुंबई से नहीं आ रहा, सूरत से आ रहा, डायरेक्ट सूरत से आ रहे हैं. बढ़िया. तो I think we are reaching at around 3:34. Same here, sir. आगे पीछे की फ्लाइट है. So we are doing that Surat, Jaipur, sorry, Chandigarh, Jaipur, Jaipur, Surat. So एक ही फ्लाइट में. We are in the same flight. minus देहरादून, Jaipur, Jaipur, Surat. अरे वंडरफुल. बस फिर मिलते हैं, जयपुर में मिलेंगे. यानी जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी अपनी. Lovely, what a coincidence. And we booked वहीं पे Marriott में book किया. Marriott तो मेरे घर के सामने ही है, वो तो 5 मिनट 3 मिनट. Lovely, lovely. So I'll call and discuss this thing also with you. ठीक है सर. मैं भी 7 दिन 8 दिन नहीं हो तो आजकल में ही डिस्कस कर लेते हैं.
चलो ठीक है सर. Lovely, sir. Lovely. वैसे ऋषिकेश से चंडीगढ़ is also just 3.5 hours. ऋषिकेश से? हाँ. क्या बात कर रहे हो? The highway is wonderful now. Just 3.5 hours. You could have actually taken the flight from Chandigarh also. मेरा ये ट्रैवल एजेंट बोल रहा था नहीं सर ये लंबा पड़ेगा ऐसा है वैसा है See, Rishikesh, Dehradun is around 2 hours. 2 hours. हाँ. So ये चंडीगढ़ is around 3.5, 4 hours. हाँ लास्ट में एंड में हम लोग मसूरी से आ रहे हैं. Mussoorie, Dehradun is just 1 hour. 1 hour. Yes. चलो. Great जी. Everyone, lovely sir, lovely start to the week, Sandeep ji. Thank you. Rohit, so good to see you after a long time. I'm seeing you after a long time. Great guys, lovely. All right जी, thank you so much. Market enjoy करो, अभी तो breakout आया है. Okay boss. Bye everyone. Bye, bye, thank you.